You guys, I am Akanksha Nagar and I used to teach zoology. So basically you can say I'm your zoology faculty. So today we're gonna start with the very first chapter in the zoology, and that is animal tissue. Although the name of the chapter in your NCERT book is structural organization in animal, but we're gonna start from animal tissue. So before I start, just tell me what is the basic unit of life. You're right, that is cell. And you know that a group of cell, when lots of cells combine together, it becomes tissue. So what is tissue? Tissue is a group of cells. So if I have to define tissue, I will say group of cell is called tissue. Clear? So you got to know that the basic unit of life is cell. When lots of cell combine together, it become tissue. So you can see that here, it's written tissue. So if I have to define the tissue, I will say tissue is a So I will say tissue is a group of cells. Yes, tissue is a group of cells. And now what these cells are doing? So you have just learned that tissue is a group of cells. What are these cells are doing? कर क्या रहे हैं ये cells? तो ये सारे cells मिलकर टिश्यू बना रहे हैं जो ये क्या कर रहे हैं बेटा? They are performing a particular similar function. Maybe not necessary similar function, but most of the time similar function. So if you look at your NCERT, अगर आप अपनी NCERT की बुक में टिश्यू का वर्ड का मतलब देखें, उसका भी लिखा हुआ है इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स. सो एनिमल टिश्यू क्या लिखा हुआ है NCERT की बुक में? इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन. Right? It's written in your NCERT. It's a group of cells performing similar function that is called tissue. और क्योंकि zoology की क्लास है, या डेफिनेशन किसके लिए हो गई बेटा? एनिमल टिश्यू के लिए हो गई, राइट? इट्स फॉर एनिमल टिश्यू. सो ये जो वर्ड है एनिमल टिश्यू, ये वर्ड किसने कॉइन किया था? दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय द टर्म एनिमल टिश्यू इज कॉइन्ड बाय द टर्म एनिमल टिश्यू इज कॉइन्ड बाय Chet. Who coined this term? It is coined by Chet. Right? So the term animal tissue is coined by Chet. And the study of tissue is known as histology. जब आप tissue की study करते हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा? We used to call it as histology. Clear? So a group of cell is called tissue. A group of cells having similar function and common origin is called tissue. So अगर मुझे tissue की definition देनी हो, मैं दोबारा से repeat कर देती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? Tissue is a group of cell. Other than group of cell, मैं और क्या बोलूँगी बेटा? The properties. अगर मुझे tissue की property बोलनी हो, मैं बोलूँगी it's a group of cells. ये लिख लो बेटा, it's important. ये लिख लो आपके लिए, आपको tissue की definition पता होनी चाहिए. It's a group of cells performing similar function and have second important point, third important point. In fact, the first was it's a group of cells. The second point was it's having similar function, and the third point is they always have common origin. Important, they always have common origin. Origin से मतलब क्या है यहाँ पर? What do you mean by the word origin? Origin से क्या समझते हो आप? Origin का मतलब हुआ बेटा कि आपने पढ़ा है we have three germ layers, right? We know that we have three germ layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. तो इनमें से किसी भी डर्म से बना होगा. लाइक अगर मैं बात करूं किसकी, मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं, तो सारे कनेक्टिव टिश्यू किससे बने होते हैं? मीजोडर्म से बने होते हैं. उसी तरह से मस्कुलर टिश्यू की बात करूं, वो किसके बने होते हैं बेटा? मीजोडर्म से बने हुए हैं. उसी तरह से नर्वस टिश्यू की बात करूं, तो वो किसके बने हुए हैं बेटा? दे ऑल आर मेड अप ऑफ एक्टोडर्म. एपिथेलियम को छोड़कर, एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ऑल द जर्म लेयर्स, वो हम बाद में बात करेंगे, राइट? सो यू गॉट टू नो द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू दैट कि बहुत सारे सेल्स मिलकर, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर, या फिर कैन से अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन एंड कॉमन ऑरिजिन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू. और ये वर्ड एनिमल टिश्यू किसने दिया है? इट इज कॉइन्ड बाय Chet. द टर्म एनिमल टिश्यू इज कॉइन्ड by Chet. And the study of tissue is called histology. Yes, study of tissue is called histology. टिश्यू की डेफिनेशन क्लियर? बहुत बढ़िया.
अब टिश्यू की डेफिनेशन हो गई है, तो अब बात करते हैं किसकी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ टिश्यू. आई नो यू ऑलरेडी नो द आंसर राइट. आप क्लास 8th में भी पढ़ा था आपने, 9th में भी पढ़ा होगा. मैम देयर आर 4 टाइप ऑफ टिश्यूज. कौन कौन से? एपिथेलियम, connective tissue. The third is muscular tissue. And the fourth one is nervous tissue. Can I repeat? Should I repeat? Let me repeat. The first is epithelium. Second is connective. Third is muscular. And the fourth one is the nervous tissue. So total 4 tissues are there. I should write it down, right? Let me write it down for you. So types of tissue. अभी पढ़ा हमने. पहला कौन सा टिश्यू बताया था? एपिथेलियल टिश्यू. दूसरा कौन सा बताया बेटा? कनेक्टिव टिश्यू. तीसरा कौन सा बताया? मस्कुलर टिश्यू. और चौथा कौन सा बताया बेटा? नर्वस टिश्यू. So basically we have 4 tissue. Basically we have 4 tissue. Epithelium, connective, muscular and nervous. आज की क्लास में